Hello everyone, my name is Anurag Singh. Welcome to Pahuja Law Academy, and this is a demo lecture for the code of civil procedure. Now, the first thing we need to understand is the importance of CPC. The laws can be mainly divided into two categories. The first is criminal, in which we study subjects like IPC and CRPC. That is it. The criminal law is limited to IPC and CRPC. Almost every other subject that we study falls under the civil category. It can be contract, or it can be the Transfer of Property Act, or it can be Hindu laws, or it can be Muslim laws, or it can be company law, or it can be labor law, or it can be IPR, or it can be the Sale of Goods Act, or it can be tort, partnership. Almost every other subject that we study, registration, limitation, ये सारे क्या है? All of them are in the civil category. Okay, and so we can clearly see that civil is much more broader than criminal, right? So we can say that 90% of the laws जो है वो civil है, and to regulate these 90% of the laws, there is only one code, which is the CPC, right? So immediately you can see that CPC becomes a very important subject for you to study because it regulates 90% of the law. Because this is the first thing. Now this is the importance of CPC from an understanding point of view. If you go to the examination point of view, तो एग्जाम में क्या होगा? In the prelims exam, you will get somewhere between 15 to 20 questions from CPC itself. This is a major subject, and that is why you can easily expect 15 to 20 questions. अभी जो डीएस का पेपर हुआ था 17 दिसंबर को, that you had 22 questions from CPC itself. So you can see it's a very important subject from the point of view of prelims. Okay. Now, as far as mains is concerned, in the mains exam there will be a separate paper on procedural law, right? And in this you will be getting questions from CPC, CRPC, and the Indian Evidence Act. Okay. So even in the mains exam you can see 1/3 weightage is still given to the CPC, right? Now, apart from this, in some mains exam, not all, but in some mains exam, you will have to write the plaint, you will have to write the written statement, and in some exams, even judgment writing is going to be there, right? Not all exams, states like MP and Chhattisgarh, they do have judgment writing, तो वहाँ पर आपको इतनी पढ़त की जरूरत है, लेकिन तभी लिख पाओगे when you are thorough with CPC. तभी लिख पाओगे when you are thorough with CPC, and same is the case with judgment writing. So you can see, even from an examination point of view, CPC becomes a very important subject for you to study. चाहे अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, चाहे फिर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ठीक है? नाउ CPC की इंपॉर्टेंस समझना इजी होता है, but CPC को समझना it can be really difficult. So if you don't know the proper way to study CPC, it can be very confusing. So to understand CPC, what we are going to do, we have to divide CPC into two parts, right? CPC को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, और ये दो पार्ट्स हमारे होते हैं. फर्स्ट पार्ट इज द सेक्शंस and the other part is the order. Okay, divide into two parts, sections versus order. So what are sections? Sections give you the general principles or the broad framework. चीजें करते हैं, आपको सिर्फ प्रिंसिपल्स या फ्रेमवर्क बताते हैं. They do not go into details. There will be no details sections. ठीक है? For details, you always need the orders, because orders are deemed as the real elaboration of proceedings, right? And this is the place where you are going to find the details. ठीक है? So just remember, CPC को समझने के लिए पहला काम क्या करना है? डिवाइड कर दो दो पार्ट्स में, सेक्शंस में और ऑर्डर्स में. सेक्शंस सिर्फ प्रिंसिपल्स या फ्रेमवर्क बताएंगे, डिटेल्स नहीं बताएंगे. डिटेल्स के लिए यू ऑलवेज नीड द ऑर्डर्स. ठीक है? नाउ another thing that you need to keep in mind is that for almost every important section, there will be a corresponding order, right? So for almost every important section, there will be a corresponding order. Okay? So how do you study CPC? You study the section and then directly jump to the corresponding order. That is the proper way to study CPC. आप क्या करोगे? सेक्शन पढ़ोगे और सीधा उससे corresponding order पे चले जाओगे.
सेक्शन में आपको प्रिंसिपल्स या फ्रेमवर्क पता चल जाते हैं, डिटेल्स के लिए आपको ऑर्डर जाना पड़ेगा, ठीक है। नेवर स्टडी सीपीसी सेक्शन वाइज और ऑर्डर वाइज, कभी नहीं करना है ऐसा। दिस इज अ मिस्टेक विच मोस्ट पीपल मेक एंड दैट इज वाई दे मिस द एंटायर पॉइंट ऑफ स्टडिंग सीपीसी, ठीक है। सीपीसी इज अ प्रोसीजरल लॉ एंड दैट इज वाई यू शुड स्टडी। नाउ एज फार एज दिस पॉइंट इज कि सेक्शन के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर पढ़ना चाहिए। लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स इन सीपीसी जहां पर कि सेक्शन का एक कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर होगा। तो फर्स्ट कॉलम इज गोइंग टू बी द टॉपिक, the second column is going to be a section, and the third column is going to be the order. So I'm just giving you few examples of sections and orders of correspondence, okay? Now suppose we are studying the topic of institution of suits, and for this we need section 26 and the order is order 4, right? तो अगर हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो पढ़ना होगा सेक्शन 26 और उसके बाद 27 पे नहीं जाएंगे हम लोग, वी विल गो टू ऑर्डर 4, ठीक है। नाउ इफ यू आर स्टडीइंग द टॉपिक ऑफ समन्स, फॉर समन्स वी नीड सेक्शन 27 एंड द ऑर्डर इज ऑर्डर 5, राइट। तो अगेन यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, वी आर जस्ट गोइंग टू द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर। सेक्शन में फ्रेमवर्क पता जाएगा, डिटेल्स के लिए ऑर्डर 5, ठीक है। अगर let's say we are studying the topic of judgment, so for judgment we need section 33 and the order is order 20, right? Again same thing, अगर हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं costs का, for costs we need section 35 and 35A and the order is order 20A, right? Again the same thing is going to happen here. अगर मान लो we are studying a topic of execution, अगर हम लोग एग्जीक्यूशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं, फॉर दिस वी नीड सेक्शंस 36 to 74 एंड द ऑर्डर इज ऑर्डर 21, राइट। अगेन द सेम थिंग, सेक्शंस पढ़ेंगे और सीधा कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर पे चले जाएंगे। अगर मान लो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं कमीशंस का, तो फॉर कमीशंस वी नीड सेक्शन 75 एंड द ऑर्डर इज ऑर्डर 26। अगर हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक लेट्स से टेम्पररी इंजंक्शन का, so for temporary injunction we need section 94C and the order is order 39. अगर हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं रिसीवर का, so for receiver we need section 94D and the order is order 40, right? अगर हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं लेट्स से अपील्स का, तो लेके चलते हैं फर्स्ट अपील्स। फर्स्ट अपील्स के लिए we need sections 96 to 99 and the order is going to be order 41. अगर मान लो हम लोग सेकेंड अपील्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं, सेकेंड अपील्स, फॉर दिस वी नीड सेक्शंस 100 to 103 एंड इसके लिए द ऑर्डर इज ऑर्डर 42. अगर मान लो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं अपीलेबल ऑर्डर्स का, अपीलेबल ऑर्डर्स, फॉर दिस वी नीड section 104 and the order is order 43, right? अगर मान लो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं इंटरप्लीडर सूट्स का, so for interpleader suits we need section 88 and the order is order 35, right? अगर मान लो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का, so for out of court settlement we need section 89 and this must be read with order 10 rule 1A 1B, right? So just few examples जहां पर कि सेक्शन का एक कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर होता है, ठीक है। आई जस्ट गिव यू अ फ्यू एग्जांपल्स, याद रखना देयर आर मेनी अदर एग्जांपल्स। जैसे कि अगर मान लो हम लोग रेफरेंस का टॉपिक पढ़ रहे हैं, फॉर रेफरेंस वी नीड सेक्शन 113 एंड द ऑर्डर इज ऑर्डर 46। फॉर रिव्यू we need section 114 and the corresponding order is order 47, ठीक है। I can give you many more examples but the point I think is section के साथ हमेशा corresponding order पढ़ोगे, ठीक है। but एक बात ये याद रखना कि section के साथ corresponding order पढ़ना, it is a very good thing but that does not mean that you can pick up any random section and just go to the corresponding order, ठीक है। why? Because you would need to arrange the whole of CPC on a fundamental question, and the question is how does
an ordinary suit run? The fundamental question is, how does an ordinary suit run? So सबसे पहले क्या होता है? The plaintiff comes and he files his plaint, right? That's how a suit starts. ठीक है, plaintiff आया और simply plaint file कर दी. After the plaintiff has filed his plaint, the second step is summons. Summons will be served upon the defendant. ठीक है? When the defendant is served with summons, now he has to file his written statement. So written statement is basically a reply to the allegations or the affirmations made in the plaint. ठीक है? Now we have the written submissions of both the parties. जैसे कि यहाँ पर plaint में plaintiff ने अपना कर दिया, WS में defendant ने अपना submissions कर दिया. Now the next stage is appearance and examination. ठीक है? And this examination is actually an oral examination, right? देखो कई बार क्या होता है, in the written submissions the parties have used such a language that the parties wanted to give it a different meaning, but the court is getting a different meaning, right? So the court would want clarification upon those issues, क्योंकि यहाँ पर आपकी meaning क्या थी, उसके लिए ही कोर्ट दोनों पार्टीज को बोलती है अपीयर होने के लिए और उनका फिर ओरल एग्जामिनेशन करती है. ठीक है, ओरल एग्जामिनेशन कैन नॉट हैपन विदाउट अपीयरेंस, एंड अपीयरेंस का पर्पस क्या है, ओरल एग्जामिनेशन. ठीक है, नाउ दोनों पार्टीज ने अपने सबमिशंस कर दिए, कोर्ट ने ओरल एग्जामिनेशन भी कर दिया. नाउ द कोर्ट अंडरस्टैंड्स कि इनके बीच में एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है. ठीक है, एंड एट दैट स्टेज द कोर्ट हैज टू लुक इनटू द फैक्ट कि क्या इनके बीच में एडीआर पॉसिबल है या नहीं है यहाँ पर. ठीक है, अगर एडीआर पॉसिबल है तो द कोर्ट कैन सेंड देम फॉर ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जो कि इट कैन बी आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलेशन और मीडिएशन, कुछ भी हो सकता है. बट इफ द कोर्ट थिंक्स कि एडीआर इज नॉट पॉसिबल, देन द कोर्ट goes on to the next step, which is framing of issues. ठीक है, issues framing, and framing of issues के बाद the next step is trial, right? And at the end of the trial there is a judgment and a decree passed. ठीक है, now याद रखना कि आफ्टर द जजमेंट एंड द डिक्री इज पास्ड वी जनरली डीम की सूट ओवर हो गया है, बट दैट इज नॉट सो, बिकॉज वन पार्टी वुड लाइक टू हैव द execution. Usually the winning party would like to have the decree in force, that is the process of execution, but the losing party generally would want to go to appeal, or it can also go for review, or it can also go for revision if he wants to challenge the decree upon the ground of jurisdiction. Okay, so this is the basic timeline upon which an ordinary suit runs, and I'm saying this again, this is a basic timeline. Okay, now the first question is, why do we need to make this timeline? Because देखो, plaint is in order 7, summons is in order 5, written statement is in order 8, right? देखो, अगर हम लोग सीपीसी का सीक्वेंस देखें तो सीपीसी ने अपने सीक्वेंस में समन्स पहले सर्व करा दिए हैं, राइट? बट वी नो कि जब तक प्लेंटिफ नहीं आया और उसने अपनी प्लेंट नहीं फाइल की है, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि डिफेंडेंट के ऊपर समन्स सर्व हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग कि ऑर्डर 5 का रूल 2 इट सेज दैट जब भी डिफेंडेंट के ऊपर समन्स सर्व होते हैं उसके पास एक कॉपी ऑफ प्लेंट जाती है. दैट मीन्स कि प्लेंट फाइल हो चुकी होगी. फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट CPC is not arranged in a way like an ordinary suit runs. ठीक है, that is why ये arrangement हम लोग को खुद करनी पड़ती है. ठीक है, चलो. Appearance and examination, this is order 9 and 10. Then we have the framing of issues under order 14. Then we have the trial or the hearing under order 18. Then we have the judgment and decree under order 20. Execution under order 21. Appeal under order 41, we are talking about first appeals here. Review is under order 47, and revision is section 115. This is the basic timeline upon which an ordinary suit runs. Now, the purpose of this timeline is, first we need to understand कि एक ordinary suit run कैसे करता है. ठीक है, and the second thing is कि जब हम लोगों ने ये timeline बना ली है, उसके बाद व्हाट वी हैव टू डू, हम लोगों को अब जाकर के सेक्शन ऑर्डर का कॉरेस्पॉन्डेंस ध्यान रखना है. ठीक है, देखो जैसे यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स बाय फाइलिंग द प्लेंट इंस्टीट्यूट ऑफ सूट, सेक्शन 26 एंड ऑर्डर 4.
तो फर्स्ट स्टेप पे हम लोगों ने जहां पर प्लेंट लिखा है वो 26 एंड ऑर्डर 4 दोनों होना चाहिए वहां पर। समन्स पे हम लोगों ने ऑर्डर 5 लिखा है, वो सेक्शन 27 रेड विथ ऑर्डर 5 होना चाहिए। जजमेंट भी सेक्शन 33 रेड विथ और 20 होना चाहिए। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पर बस फिट कर देते हैं। प्लेंट में ऑर्डर 7 के साथ होना चाहिए सेक्शन 26 रेड विथ ऑर्डर 4। समन्स के साथ होना चाहिए सेक्शन 27 रेड विथ ऑर्डर 5। देन वी हैव लेट्स एग्जीक्यूशन sections 36 to 74 read with order 21. Judgment and decree, this is section 33 read with order 20. Appeal, this is sections 96 to 99 read with order 41. Review, this is section 114 read with order 47. Okay, so this is the basic timeline. I'm saying this again, this is the basic timeline because the real timeline is much more complicated than this. Okay, now at Pahuja Law Academy, the syllabus for CPC is the entire syllabus of CPC is designed on this timeline. ठीक है, ताकि तुम लोग जब पढ़ो CPC को तो तुम्हें पता हो कि ओके सबसे पहले हम लोगों ने प्लेंट फाइल कर दी है, अब क्या होगा, अब समन्स जाएंगे, समन्स सर्व हो गए, अब डिफेंडर अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा, अब पार्टीज दोनों सॉरी अब कोर्ट जो दोनों पार्टीज को बुलाएगी और उनका अब पेरेंट्स होगा और एग्जामिनेशन होगा, एंड देन उसके बाद इशू फ्रेम किए जाएंगे, एंड देन ट्रायल होगा, फिर जजमेंट पास होगी, जजमेंट के बाद अपील और एग्जीक्यूशन कुछ भी हो सकता है। तो तुम्हारा पूरा सिलेबस जो डिजाइन है सीपीसी का इन एट पाहुजा लॉ एकेडमी वो इसी टाइमलाइन पे डिजाइंड है। ठीक है, सो दैट सीपीसी मेक्स सेंस। कई बार आप सीपीसी पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि वी आर गोइंग डायरेक्शनलेस, हम लोग को पता नहीं चल रहा कि हम लोग कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं। दैट इज वाई दिस टाइमलाइन इज नीडेड। और देखो एक बात याद रखना, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि सीपीसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बिकॉज 90% लॉज आर सिविल। अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में डिवोर्स का केस चल रहा है यही टाइमलाइन चलेगी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस है यही टाइमलाइन चलेगी, आईपीआर में इंफ्रिंजमेंट है यही टाइमलाइन चलेगी। ठीक है, सो ऑल ऑफ दोज लॉज आर गवर्न बाय सीपीसी। तो सीपीसी जो है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड यू नीड अ राइट मिक्स ऑफ थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिस, जिसमें कि आपको सीपीसी पढ़ना चाहिए। सो थ्योरी पार्ट इज द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ द सेक्शंस एंड ऑर्डर्स एंड द प्रैक्टिस पार्ट इज द टाइमलाइन अपॉन व्हिच इट हैज बीन अरेंज्ड। ठीक है, सो अब देखो यहां पर याद रखना, ऑल्दो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग बट ये भी इनकम्प्लीट है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हमारी मिसिंग है। जैसे वी कैन नॉट जस्ट गो टू एनी कोर्ट एंड फाइल द प्लेंट, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि उसी कोर्ट में हम लोग फाइल करेंगे विच कोर्ट हैज ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को इस टाइमलाइन पे पहुंचने से भी पहले हम लोग को देखना पड़ता है कि इन विच कोर्ट इज द प्लेंट गोइंग टू बी फाइल्ड। द क्वेश्चन इज इन विच कोर्ट द प्लेंट मस्ट बी फाइल्ड। ठीक है, and the answer would seem easy but it's not really an easy answer because इसका आंसर जो है वो हम लोग एक लाइन में बोल सकते हैं a court which has jurisdiction। ठीक है, where do you file the suit? a court which has jurisdiction। but ये भी याद रखना पड़ेगा कि this is not something which you can figure out very easily because you need to understand jurisdiction कि what is jurisdiction। Now the term jurisdiction is defined is divided into three parts। ठीक है, the first part is the subject matter jurisdiction and the second is pecuniary jurisdiction and the third one is territorial jurisdiction। ठीक है, now subject matter jurisdiction के लिए there is no specific section, there is no specific section, inference is taken from section 9। ठीक है, it is the inference from section 9। For the pecuniary jurisdiction the provisions are sections 3, 6 and 15 and for territorial this is sections 16 to 20 and they are read with sections 21 to 25। ठीक है, that's how you figure कि which court will have jurisdiction। so the answer may seem easy कि किस कोर्ट के पास jurisdiction होता है but it's not so easy। you have to figure out कि कोर्ट के पास subject matter jurisdiction भी हो, pecuniary भी हो और
टेरिटोरियल भी हो, ऑल ऑफ दोज थिंग्स मस्ट बी देयर. सो बिफोर we can file the plaint in a court, we have to understand that the court must have jurisdiction. ठीक है, that is why सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, jurisdiction. ठीक है, so to understand CPC first you need to understand कि हम लोगों को कौन सी कोर्ट में सूट फाइल करना है. पहला jurisdiction पार्ट के लिए करते हैं. ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहां पर और अराइज होता है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, तो 1 कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ये कहता है who can be made a party. Question number 2 says, who can be made a party? Because you cannot just make anyone a party. The party must have some interest in the suit. आप किसी के ऊपर भी सूट नहीं फाइल कर सकते, right? तो पार्टी आप किसे बनाओगे? Now for that, you need order 1. Order 1 is parties to suit. ठीक है, जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि there can be more than one plaintiff and there can be more than one defendant. ठीक है, so the order 1 rule 1 बात करता है joinder of plaintiffs की, और order 1 rule 3 बात करता है joinder of defendants की. ठीक है, and then इसी में हम लोग पढ़ते हैं what do you mean by misjoinder and what do you mean by non-joinder. ठीक है, and what is the effect of misjoinder and what is the effect of non-joinder. So when you have figured out the code, the next thing you need to understand is कि किसके ऊपर मैं सूट फाइल कर सकता हूं और क्या मुझे अकेले ही सूट फाइल करना पड़ेगा, और I can have other people with me as co-plaintiffs to file the suit. ठीक है, तो before we go on the timeline हम लोग को ये 2 क्वेश्चन का आंसर चाहिए, and for these and the answer to these questions is in these 2 provisions. जो question number 1 and question number 2 में है हमारे. ठीक है, तो दिस इज हाउ यू स्टडी CPC. अब मैं फिर से बोल रहा हूं कि देखो CPC इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड दैट इज वाई आपको प्रॉपर मेथड आप पता होना चाहिए CPC पढ़ने का. ठीक है, यू कैनॉट जस्ट पिक अप एनी रैंडम सेक्शन एंड गो टू एनी प्रोविजन. लाइक लेट्स से रेस जुडिकाटा, एवरीवन अंडरस्टैंड्स रेस जुडिकाटा कि अगर एक बार सूट की हियरिंग हो गई है तो दोबारा हियरिंग नहीं होगी. बट you should also know the proper use of res judicata, because इस सूट में याद रखना कि सेकंड सूट का जो WS होता है वहां पर जाकर के डिफेंडेंट रेज करता है res judicata का प्ली, क्योंकि फर्स्ट सूट का अगर res judicata है तो फर्स्ट सूट की हियरिंग ऑलरेडी हो चुकी है, तो एक बार ये टाइमलाइन पूरी कंप्लीट हो चुकी है. जो सेकंड सूट की टाइमलाइन स्टार्ट होगी, प्लेंटिफ जब अपनी प्लेंट फाइल करेगा वो कभी नहीं बोलेगा कि मेरा सूट बार्ड है, वो तो कहेगा कि मेरा सूट मेंटेनेबल है. और समन्स में भी कोर्ट को नहीं पता होगा, कोर्ट समन्स सेंड कर देगी. बट जब डिफेंडेंट अपीयर होकर के अपनी WS फाइल करेगा वहां पर वो बोलेगा दैट दिस सूट हैज ऑलरेडी बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड. तो यहां पर जाकर के जो सेकंड सूट की जो रिटन स्टेटमेंट होगी उसमें वो एप्लीकेशन, उसमें वो ऑब्जेक्शन रेज करता है ऑफ रेस जुडिकाटा. ठीक है, सो माय पॉइंट इज कि CPC को आप सेक्शन वाइज एंड ऑर्डर वाइज जब पढ़ते हो, आपको टॉपिक भले ही समझ में आ जाए बट यू विल ऑलवेज नीड टू अंडरस्टैंड कि इसको मैं प्रैक्टिकली कैसे यूज करूं, एंड प्रैक्टिकलिटी के लिए यू ऑलवेज नीड दिस टाइमलाइन. ठीक है, तो दैट वाज माय इंट्रोडक्शन टू हाउ शुड यू स्टडी CPC, एंड दिस इज द वे, दिस इज द प्रॉपर वे टू स्टडी CPC. देयर आर many ways of studying CPC in the wrong way. आप गलत तरीके से पढ़ना चाहो, आप बहुत तरीके हैं, सही तरीका पढ़ने का यही होता है. दिस इज द बेस्ट वे टू स्टडी CPC. ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन.